Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Chère Assemblée, la voici venue cette nuit durant laquelle nos cœurs se submergent d'émotions. Une nuit durant laquelle, sans avoir vu, sans avoir connu, nous ressentons cette tristesse qui nous lie si intimement avec notre imam. Un lien qui perdure, un lien qui va perdurer, un lien qui n'a pas de frontières, un lien qui émerge dans le cœur de ceux qui aspirent à la justice, à la bravoure. Plus simplement, un lien qui émerge dans le cœur de tous ceux qui aspirent à devenir des meilleurs êtres humains. Chère Assemblée, résumons ce que nous avons dit depuis quelques jours. Le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, est à l'origine de la diversité. Il est à l'origine de la différence entre nous. Ces différences sont une signature de sa puissance créative. Il convient donc de respecter ces différences et d'aspirer à l'harmonie entre nous. L'harmonie, oui, mais comment ? Ce à quoi nous avions répondu ensemble qu'il fallait nous faire preuve de respect mutuel. Et ce même respect mutuel allait nous permettre de coexister. Et nous avions poussé la réflexion plus loin en nous demandant comment était-il possible de coexister, de vivre ensemble. Nous avions posé la question à la nature et la nature nous avait montré ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Nous avions donc, si votre mémoire ne vous fait pas défaut, la mienne, les parasites, les compétiteurs. Deux comportements à ne pas adopter. Hier, nous nous sommes intéressés à une question intéressante. C'était la notion de la symbiose, ou comment la nature nous apprend à nous entraider mutuellement. Nous avions cité les exemples de l'homme et les bactéries de la flore intestinale. Nous avions énoncé l'exemple de la fourmi et de l'arbuste Bacteria. Nous avions également cité le fameux exemple du crocodile du Nil et du pluvion. Nous avions également dit qu'il fallait porter plus d'attention à ce qui nous rapproche que ce qui nous éloigne. Nous nous sommes quittés en se demandant s'il y avait quelque chose de plus fort que la symbiose, quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus joli. Eh bien, à votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort ? Si je suis là, c'est qu'il y a bien sûr quelque chose de plus fort. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. En effectuant mes recherches, je suis tombé sur quelque chose d'assez fort. Les scientifiques appellent ça le commensalisme. Je répète, le commensalisme. C'est quoi le commensalisme ? Eh bien, je vous avais dit au tout départ, dans l'un de mes majlis, que ce qui est bien avec la nature, c'est que tout se démontre par l'exemple. Continuons donc. Dans les forêts tropicales, on remarque un genre de commensalisme assez intéressant. C'est le cas des plantes qu'on appelle des plantes épiphytes. Un terme scientifique que je vais expliquer. On a remarqué l'existence de certaines plantes qui pouvaient évoluer ou vivre sans sol. Jamais nous regardons. Sans avoir besoin de contact avec celui-ci. Comment font-elles ? Eh bien, elles utilisent les autres plantes ou les autres arbres comme support. Hier, nous avions évoqué la vie dans la vie quand nous avions évoqué les microbes dans nos intestins. Aujourd'hui, c'est la vie sur la vie. Parmi ces plantes, on retrouve la célèbre plante qui s'appelle l'orchidée.
l'orchidée pousse sur des arbres en hauteur. Et ce pourquoi? Pour pouvoir capter la lumière du soleil qu'elle ne pouvait pas avoir quand elle était en bas. L'arbre qui accueille l'orchidée contribue donc à la vie de celle-ci sans en tirer un quelconque profit ou bénéfice. Un autre exemple pour mieux comprendre la notion de commensalisme. Dans les profondeurs des océans vit un poisson qu'on appelle le poisson pilote. Ce n'est pas un champion de Formule 1, c'est un poisson assez atypique. Je vous explique pourquoi. Ce dernier a une particularité, c'est qu'il cohabite avec un grand prédateur qu'on appelle le requin. Le poisson pilote profite de l'onde de nage. Vous savez, quand les grands mammifères se déplacent, dans l'eau par exemple, vous créez automatiquement un courant. Et quand vous allez à la piscine, c'est le même effet en fait. D'accord? Donc le poisson pilote, il profite de l'onde de nage du requin pour se déplacer avec lui sans faire le moindre effort. Il profite aussi de la férocité du requin. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit des restes du butin de chasse de celui-ci. Mais vous me direz, quelle est la contrepartie comme le crocodile d'hier, le crocodile qui ouvrait sa bouche et dont l'oiseau faisait le cure-dent? Eh bien, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune contrepartie exigée par le requin. Le requin, qui est un prédateur, un carnivore qui ne manquerait pas de manger un tel poisson, eh bien, il oublie sa nature de carnivore, il oublie sa nature de prédateur, il n'exige rien en retour, il aide le poisson pilote sans attendre aucun bénéfice en retour. Il met son instinct de prédateur de côté. C'est ça le commensalisme. Le commensalisme, c'est quoi? C'est aider une espèce en dépassant son propre intérêt, sa propre nature, sans attendre aucun bénéfice en retour. Chers assemblés, si je vous pose maintenant la question, qu'est-ce qui anime un tel acte? Qu'est-ce qui fait que le requin, il n'attend aucun bénéfice et il aide quand même le poisson pilote? Qu'est-ce qui fait que l'arbre qui abrite l'orchidée fait ce geste-là? Nombreux, si ce n'est la majorité d'entre vous, me diront, c'est de l'amour. C'est l'amour de son prochain, de son semblable. Eh bien non. Non, ce n'est pas tout ça. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un sentiment qui est égoïste. C'est un sentiment égoïste parce que quand on aime, on aspire toujours à quelque chose en retour. De l'amour, du plaisir, du respect, de l'admiration, de la tendresse, de l'affection, etc., etc. Ce quelque chose n'est pas forcément provoqué par celui à qui on fait du bien. Mais c'est peut-être un effet qu'on recherche mutuellement. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais ce que je vais vous dire est encore plus choquant. Ce que ressent une mère pour son enfant, ce n'est pas de l'amour. Je répète, ce que ressent une mère pour son enfant, ce n'est pas de l'amour. Je pousse la réflexion encore plus loin. Dieu est-il amour? Dieu est-il amour? J'ai envie de dire, non. Non, Dieu n'est pas amour. L'amour ne fait pas partie des qualités de Dieu. Ça vous choque? Ça vous choque un peu? Je me suis intéressé au Asma ul-Husna. C'est quoi les Asma ul-Husna? Ce sont les noms de Dieu. Il y en a combien? 99. Eh bien, dans ces 99 noms de Dieu, il n'y en a aucun, je dis bien, il n'y en a aucun qui s'appelle Al-Muhib. Traduisez, l'aimant ou celui qui aime. Mais ne vous inquiétez pas, on a des notions encore plus puissantes que celle-là. Imaginez un robinet d'eau. Un robinet d'eau que l'on laisse couler pour tous, sans exception, pour que tout le monde puisse y désaltérer. Sans exception, je dis. Que ce bénéfice soit accordé à la création de manière continue, sans exigence, sans un quelconque retour. Voilà ce qui est plus fort et plus puissant que l'amour. En islam, les concepts qu'on utilise et que nous utilisons pour commencer tout acte, c'est quoi? C'est Bismillahirrahmanirrahim. À chaque acte que nous faisons, ce verset nous rappelle de le faire, de le reproduire
de manière totalement désintéressée. Je m'explique. On traduit souvent Ar-Rahman et Ar-Rahim par le miséricordieux, le très miséricordieux. Et à mon sens, cette traduction ne fait pas honneur aux qualités divines. Je m'avance un tout petit peu, mais c'est mon ressenti. À mon humble avis, les mots qui conviennent le plus sont le philanthrope ou l'altruiste. C'est quoi un altruiste, chère Assemblée? Eh bien, c'est une personne ou une entité dont les actes de bien ne sont motivés que par le bien de l'autre, le bien-être de l'autre. Des actes totalement dénués de l'égoïsme. À l'image du requin, à l'image de l'arbre qui accueille l'orchidée, voilà l'objectif à atteindre. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu nous apprend. Et si nous faisions le lien avec l'imam Hussein, son sacrifice était-il un acte d'amour ou un acte altruiste? Pensez-vous que l'imam Hussein s'est sacrifié en espérant tirer un quelconque bénéfice ou un quelconque profit en retour? Vous l'aimez suffisamment pour vous faire une idée de la réponse. Chère Assemblée, dans la pratique, ça donne quoi l'altruisme? C'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, un acte fait par amour n'est rien face à un acte altruiste, c'est-à-dire dénué de tout égoïsme. Exemple, nous participons au niaz, au majlis, aux différents fêtes. Pourquoi? Par amour de l'imam Hussein, par amour de l'Ahlul Bayt. Vous me suivez? Essayons juste une fois, essayons demain, le jour de Ashura, qui est le jour de l'imam Hussein, de faire en sorte que nos dons deviennent altruistes. Comment? Eh bien, franchissant le premier palier qui mène à l'altruisme. C'est lequel? C'est le palier de l'anonymat. Au moins, le pauvre Shaïk qui est là n'aura pas la frousse de sa vie parce qu'il aura oublié un nom, une famille, un malheur. Et en plus de ça, question pratique, ça fera 10 minutes de plus pour le Gram, 10 minutes de plus pour le Majlis en français peut-être, 10 minutes de plus pour le Majlis en Gujarati, ou encore 10 minutes, une occasion de finir 10 minutes avant l'heure. Mais ça, c'est une question pratique. Chère Assemblée, si je résume tout ce qu'on a dit jusque-là, nous vivons dans une société où les différences sont nombreuses. Au lieu de critiquer ces sociétés à tout va, il faut apprendre à les respecter, il faut apprendre à coexister. Et la meilleure manière de coexister, c'est sans doute ce qu'on a dit hier, la symbiose, autrement dit, cohabiter de manière à pouvoir tirer un bénéfice mutuel, ou après, comme aujourd'hui, le commensalisme, ou de manière purement altruiste. Chère Assemblée, la meilleure manière de trouver sa place, c'est d'user de la force de l'altruisme. Mais vous me direz sans doute, Malik, moi je veux bien être altruiste, mais il faut que ça soit réciproque. Il ne faut pas oublier, chers amis, qu'une place, ça se gagne. Les cœurs, ça se conquiert. Et le respect, ça se préserve. Et puis on ne peut pas obliger les gens à être bons envers soi. C'est pas possible. On ne peut pas les obliger à être bons envers soi. Mais il y a une anecdote qui est très intéressante dans la vie de Nabi Issa. Et j'en suis sûr, vous l'avez déjà entendu. Nabi Issa, un jour, avec ses disciples, passait par un endroit où il vit un arbuste. Sur l'arbuste, il y avait un insecte, un petit insecte qui essayait de grimper. Il n'y arrivait pas. À chaque fois, il tombait. Nabi Issa, qu'est-ce qu'il fit? Eh bien, il vint prendre le petit insecte pour l'aider à monter. Sauf que cet insecte commença à le piquer. Et à chaque fois que Nabi Issa essayait de le relever, eh bien, il lui piquait, du coup, il le relâchait. L'insecte retombait au sol. Nabi Issa refit le même geste, maintes et maintes fois,
Jusqu'à un moment où ses disciples se firent étonnés, mais le Nabi Isa, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Cet insecte est en train de vous manger le doigt. C'est alors que Nabi Isa a une réflexion, une leçon de vie pour nous tous. Nous qui vivons dans une société multiculturelle où chacun a des spécificités différentes. Nabi Isa dit quoi? Nabi Isa dit, si lui n'oublie pas sa mauvaise habitude, comment est-ce que moi je peux oublier la bonne habitude qui est la mienne? Azizan et Martalam. Salut à Muhammad wa ala Muhammad. C'est ça, vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble, ce n'est pas forcément attendre quelque chose des autres. C'est déjà montrer, de lui donner le meilleur de soi-même. Puissions-nous vivre en harmonie avec tous, et surtout en harmonie avec soi-même. Je tiens à remercier une personne qui m'a aidé à préparer tout cette majlis. Il se reconnaîtra. Inch'Allah, que Dieu nous redonne l'occasion ensemble de rediscuter de tout cela. Inch'Allah, j'espère que demain jour de l'Ashura, eh bien, il y aura un petit acte altruiste de la part de chacun d'entre nous. Cet acte altruiste qui fait partie justement d'une démarche positive, celle de l'imam Moussa. Salam Muhammad wa ala Muhammad. Zahir Paravshe, convinati cariz by Nasir Sharif Upase qui était un yavi et temno ilan pesh kare par Muhammad wa ala Muhammad salawat. सानिया जरा मद्रेसा तरफ थी एक जरूरी ऐलान पेश કરવા ચાહું છું ઇન્શાઅલ્લાહ શનિવારના 8 નવેમ્બરના ફરીવાર આપણા મદ્રેસાની દાખલ છે પણ એ જ ટાઈમ પર તમે વાકેફ છો કે 6 વાગે બરાબર આપણા નવજવાન બહેનો અને ભાઈઓ પ્લસ ફોકાદેરોમાં એક ઇવેન્ટમાં પ્રોગ્રામે કર્યા છે હુ ઇઝ હુસૈન તો એટલા માટે કે આપણા માસ્તરિયાઓ આપણા શાગીર્દો અને માવિત્રો આ અહમ ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈ શકે એક્સેપ્શનલમાં અમે જરાક ફેરફાર પ્રોગ્રામમાં લઈ આવ્યા છે અને મદ્રેસો ઇન્શાલ્લાહ 14h થી લઈને 17h સુધી રાખવામાં આવેલું છે યાની કે જરાક આગળ કર્યા છે અને avancé કર્યા છે au lieu de 16h à 19h30 તો ખાસ હું ભલામણ કરું છું મદ્રેસાના રેસ્પોન્સિબલ તરીકે નહીં પણ એક આઝાદાર હુસૈન તરીકે હું મારા બધા નવજવાન ભાઈઓ અને બહેનોને હું કહું છું કે 40 વર્ષ પહેલા અગર આપણા માવિત્રો આ સમાજને ઊભી કર્યા એ ખાતે એ ઉમ્મીદ થી કે આ 4 દિવાલના વચ્ચે આપણે ઇમામ હુસૈનની ક્રિયા કરી શકીએ હવે ટાઈમ આવી ગયો ભાઈઓ અને બહેનો કે 40 વર્ષ બાદ આ દિવાલના બહાર જે ઇમામ હુસૈનનો ઇન્સાનિયતનો સંદેશો છે અને આપણે આખા માશાઅલ્લાહ શેખ ઝાહિરની તકરીરો સાંભળ્યા છે મુસલસલ કે ઇન્સાનિયતનો પેગામનો આપણા પાસે એક શું કહે છે ટ્રેઝર છે એને બહાર લેવા માટે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે હિંમત કરીને થોડુંક આપણા નવજવાન ભાઈઓ અને બહેનોને સાથ દઈએ અને જેવી રીતે હમણાં હું જોયો એક બાળકનું ટી-શર્ટમાં લખેલું હતું તો એ હું જુમલો તમારી સમક્ષ પેશ કરું છું keep calm and say labbaik ya Hussein Muhammad wa ala Muhammad salawat જમજુલા એક માની ફરિયાદ એક માની પુકાર રિવાયત લખે છે કે જ્યારે આશૂરનો દિવસ ખતમ થઈ રહ્યો હતો ને કરબલાના મક્તલમાં જ્યારે ખૈમાઓ બળી ગયા એક દુખિયારીમાં ખૈમાની બળેલી સાંદ્રની બાજુમાં બેઠી છે ને પોતાના 6 મહિનાના અસગરને યાદ કરે છે મારા અસગર તું પાછો આવી જા મારો અસગર તું પાછો આવી જઈશ ને તો આ માં તને આખી રાત ઝૂલો ઝૂલાવશે માં થાકશે નહીં માં ઘણી ફેરે બચ્ચાને રમાડતા રમાડતા થાકી જાય સુરાવતા થાકી જાય પણ ઉમેરા બાપ રોઈ રોઈને કહે છે મારો અસગર તું પાછો આવી જા આખી રાત માં તને ઝૂલો ઝૂલાવશે આખી રાત માં તને સુવડાવશે આખી રાત માં જાગીને તને પ્યાર કરશે પણ તું એક ફેરે પાછો આવી જા
असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात। बेटा तुझे मैं लोरी सुनाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात। आजा के बढ़ रहा है अंधेरा ए मेरे लाल, खुद आके देख ले तू हुआ क्या है मेरा हाल। आजा के पास तुझको, आजा के पास तुझको सुलाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात। बैठी हूँ पास झूले कितना सा सोच के, माँ की सदा पे बेटा तू आएगा लौट के, गोदी में तुझको अपनी, गोदी में तुझको अपनी सुनाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात। आवाज दे रही है सकीना कहाँ हो तुम, मार बहन पे कुछ तो खुदारा करो रहम, कैसे बिना तुम्हारे, कैसे बिना तुम्हारे गुजारूंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात। बेटा तुझे मैं लोरी सुनाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात, असगर तुझे मैं झूलाऊंगी सारी रात। मोहम्मद मुराद में सो गए वीरान झूला हो गया, कत्ल असगर हो गया वीरान झूला हो गया, वो तो जंगल जान से वीरान झूला हो गया। दिल कहीं लगता नहीं, याद आती है सूरत तेरी, दिल
नहीं याद आती है सूरत तेरी, अब ये दुखिया क्या करे, वीरान झूला। अपनी सामने असगर में शबी भी गई। हुसैन ने समझ न थी आती कि असगर की लाश खैमा के इतना ले जाए। अजादार कमान असगर की लाश के इतना देखा रे। अजादार इमाम हुसैन जय खैमा नी बाजू मारिया। अरे खैमा ना पर्दा में पकड़ी ने 4 वर्ष में सकीना हाथ जोती रखी। जय हुसैन ने जोई आवाज दी बाबा हुसैन मारे भाई पानी पी लो, प्यासी रह गए। बाबा मारे भाई पानी पी लो। तो अजादार इमाम खैमानी बाजू में आया, दामन ने हटाया, सोचो अरे खून थी असगर नाशो, खून मातर बतर पे गयो छे। अजादारो मेरा बाप दौड़ती दौड़ती आई, रोवा लगी मारा असगर तने जालिमो तारा जेवा बच्चा ने पण नथी मुक्ता। अजादारो साबर सोनी असगर की मुसीबत आ नथी। असगर ની મુસીબત ઈ નથી કે હુરમલાનો તીર લાગ્યો। અઝાદારો કરબલાના મખતલની અંદરમાં એક એવો શહીદ છે કે જે 2 વાર શહીદ થયો છે, યલી અસગર છે। અઝાદારો સાંભળશો, જ્યારે ઇમામ હુસૈન અસગરની લાશને લઈને આવ્યા, શું કર્યા? ખૈમાની પાછળ લઈ ગયા। રિવાયત લખે છે કે દુનિયાનો કોઈ પણ મા બાપ આવો નહીં હોય કે માના હાથમાં અસગરની લાશ છે, ખૈમાના પછવાડે હુસૈન ઝુલ્ફિકાર તે કબર ખોદી રહ્યા છે। બાપ બચ્ચાની કબર ખોદી રહ્યો છે। અઝાદારો હુસૈન કબર ખોદી રહ્યા છે। મેરા બાપ અસગરની લાશ લઈને ઊભી છે। જ્યારે કબર તૈયાર થઈ ગઈ, હુસૈન ઇબ્ને અલી અસગરની લાશને કબ્રમાં નાખે છે। અઝાદારો આહિસ્તા આહિસ્તા કરબલાની તપતી તપતી રેત અસગરના શરીર ઉપર નાખવાનું શરૂ કર્યું। રિવાયત લખે છે કે હુસૈન અસગરના પગથી ચાલુ કર્યા। ગરગરતી રેત, ગરમ ગરમ રેત અસગરના પગ ઉપર રાખ્યા, પછી અસગરના પેટ ઉપર રાખ્યા, અસગરના છાતી ઉપર રાખ્યા। અઝાદારો જ્યારે અસગરના ચહેરામાં ગરમ ગરમ રેત નાખવાનો વારો આવ્યો, હુસૈન જેવો સાબિર ઇમામ મોઢાને ફરાવી નાખ્યો। મારા અસગર ખુદા હાફિઝ, અરે મારા અસગર ખુદા હાફિઝ કરીને અસગરની લાશને ઇમામે હુસૈન કરબલાના મક્તલમાં દફન કરી દીધા। ખૈમાની પાછળ દફન કરી દીધા। અઝાદારો આશુરનો દિવસ પૂરો થઈ ગયો। જ્યારે શામે ગરીબા આવી, ઉમરે સાદ એક શહીદોના સરને કલમ કરવાનો હુકમ દીધો। અઝાદારો ઉમરે સાદ જ્યારે ગયો, શું જોયું કે 71 સર છે, 71 માથા છે। અઝાદારો ઉમરે સાદે સવાલ કર્યો કે હુસૈનના 72 લોકો શહીદ થયા હતા, એક સર ઘટી રહ્યો છે, એક સર માંકે થઈ રહ્યો છે। અઝાદારો ખૂબ જાણીને કીધું, હા એ ઉમરે સાદ એક 6 મહિનાનો બાળક હતો, એક 6 મહિનાનો બાળક હતો જેને હુરમલાએ શહીદ કર્યો હતો, જેને હુરમલાએ કતલ કર્યો હતો। હુસૈન આ બચ્ચાને ખૈમાની પાછળ દફનાવી દીધા છે। અઝાદાર ઉમરે સાદે હુકમ દીધો, આ બચ્ચાનું માથું મને ખપે છે। અઝાદાર આ બચ્ચાનું માથું ઉમરે સાદે માંગ્યો। સાંભળશો અઝાદારો, અમુક ઘોડે સવાર ઘોડા ઉપર સવાર થયા, હાથમાં એક નેઝો લીધા અને ખૈમાની પછવાડે ગયા। જ્યાં જ્યાં પહોંચી જમીન દેખાતી હતી, અઝાદારો નેઝાને જમીનમાં કુચાડતા હતા। જ્યાં જ્યાં પહોંચી જમીન દેખાતી, નેઝાને જમીનમાં કુચાડતા હતા। અઝાદારો કે ઝાલિમ આગળ આવ્યો, જ્યાં પહોંચી જમીન દેખાડી, જમીનમાં નેઝાને કુચાડ્યો। ઉમેર બાપ બરબરતા ખૈમાની બાજુમાં ઊભી ઊભી જોઈ રહી છે કે મારા અસગરની લાશને ગોતી રહ્યા છે। અઝાદારો રિવાયત લખે છે, દિલ ઉપર હાથ રાખીને સાંભળશો। અઝાદારો રિવાયત લખે છે, એક ઝાલિમ આગળ વહેતો, એક પહોંચી જમીનમાં નેઝાને માર્યો। જ્યારે નેઝાને જમીનમાંથી ખેંચ્યો તો એ નેઝો ખાલી ન આવ્યો। અરે અસગરની નાની લાશ નેઝાની સાથે બહાર આવી ગઈ। અઝાદારો ઝાલિમ
असगर नु माथो खाई पो असगर नु माथो ने कलम करो असगर ना शरीर ने मेरा बाप ने पास फेंकी दी तो आजादारो मेरा बाप दौड़ती दौड़ती बचाना शरीर ने नहीं ली दो ऐ मारो असर मां ने माफ करी दे मां तने न बचानी शी और घड़ी कहते हुए जाते हो चूल्हे के करीब झूलने वाले मेरे वीरान झूला हो गया असगर हो गया वीरान झूला हो गया वो तो जंगल जा बसे वीरान झूला हो गया पर गया दिल झूलने से बेजम साबर सिपते पयंबर दरिया वो माता जाता है मोहरम करो गिरिया बाजारी दरिया वो माता जाता है मोहरम करो गिरिया बाजारी दरिया वो माता हमसिया बेजम साबर सिपते पयंबर दरिया वो माता हमसिया बेजम सार बरसते पयंबर दरिया वो माता जाता है मोहरम करो गिरिया बाजारी दरिया वो माता जाता है मोहरम करो गिरिया बाजारी दरिया वो माता हुसैन या हुसैन या हुसैन गमे शब्बी आओ ज़हरा की दुआ लो आओ ज़हरा की दुआ लो गमे शब्बीर मनाने वालों गमे शब्बीर मनाने वालों आओ ज़हरा की दुआ लो आओ ज़हरा की दुआ लो लगे मातम को सजाने वालों लगे मातम को सजाने वालों आओ ज़हरा की दुआ लो गमे शब्बीर मनाने वालों गमे शब्बीर मनाने वालों आओ ज़हरा की दुआ लो या हुसैन या हुसैन या हुसैन आले मोहम्मद फिरती है दर दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर आले मोहम्मद फिरती है दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर आले मोहम्मद फिरती है दर दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फातिमा के बेटे को लेकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कैसो में उजड़ा माँ बुला के माँ को लूटा रुके तेरे
आंसू जो बहाएगा हसनैन तेरे गम में, आंसू जो बहाएगा जन्नत में वो जाएगा। ज़हरा का ये वादा है हर जाओ मुसलमानों, ये किसका नवाजा है बरसात में तीरों की, ये किसका नवाजा हमने लूटा है घर फातिमा ज़हरा का, दिनों ने लूटा है। देखो जरा लोगों उम्मत का तमाशा है बरसात में तीरों की, ये रास्ता है।
के कोने से कभी हर कोई कहता था अजाओ भी मन बफिदा है मौला, अजाओ भी मन बफिदा है मौला। आज क्या खुदा नसीब करे इंशाअल्लाह, और आपके हर एक मुरादों पेश करे अने कबूल करे इंशाअल्लाह। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले आया दीदारे करबला हो, मरने से पहले आया दीदारे करबला हो। या रब हक ज़हरा तौफीक ये अता हो, मरने से पहले आया दीदारे करबला हो। इस खाक के बया पे शहकाल हो मिला है, शहकाल हो मिला है, हर लादवा मर्ज की ये खाक ही दवा हो, मरने से पहले दीदारे करबला हो। इस खाक के बया पे शहकाल हो मिला है, शहकाल हो मिला है, हर लादवा मर्ज की ये खाक ही दवा हो, मरने से पहले